First of all, I wish you very happy Republic Day. We are gathered here today to celebrate 77th Republic Day. Our Constitution, which established India as an independent, socialist, secular, democratic republic, went into effect on January 26, 1950. Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of our Constitution, along with Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel and others planted our nation's based on justice, equality and liberty. But they promote harmony, equality and peace. The leader who forced to free us to forgive rules. This road of democracy which is the reason we now live in a democratic country. The main event of the day is the Grand Parade on Kartavya Path in New Delhi, which presents India's defense power, cultural traditions and achievements to the rest of the world. The President raised the flag and read, it dropped from a bunch of flowers that attached to it. Indians celebrate this day with pride in their nations and pay tribute to our freedom soldiers. Every year India celebrates the Republic with the theme this year's theme Vande Mataram. And the chief guest will be the top leadership of the European Union and the President of the European Council. India has one of the greatest constitutions in the world and is the most populous nation on earth. India is the world's largest democracy. India is still hampered by a number of issues including terrorism, murder, corruption and crime. Year after all these years, as a republic, India continues to face these kinds of domestic problems. As lawful citizens, it is our responsibility to advance the country and defend our country to be true citizens. I am proud to be an Indian. Once again, I wish you all a very happy Republic Day. Thank you, Jai Hind. माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य शिक्षक गण व मेरे प्यारे सभी छोटे बड़े भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हर साल हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। यह दिन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन हमारे पास अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कोई भी संविधान नहीं था। ऐसे में तब एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान को तैयार किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे संविधान का जनक कहा जाता है। इस संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान नागरिकों को कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद देश में बहुत उन्नति हुई, परंतु आज भी देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज हम इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। मैं अपनी भाषण का अंत एक शायरी से कहना चाहूंगी। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीयाः गणतन्त्रदिवसं सोत्साहं प्रतिवर्षे जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्के अयम् उत्सवः सम्पूर्णदेशे आयोज्यते। 1950 तमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने अस्माकं देशस्य संविधानं प्रवर्तनं जातम्। एतत् संविधानं विश्वस्य बृहत्तमं लिखितं संविधानं वर्तते। अस्माकं देशः एकः सार्वभौमः समाजवादी धर्मनिरपेक्षः लोकतान्त्रिकः च गणतन्त्रः अस्ति। अस्मिन् दिने वयं तान् सर्वान्
देशभक्तान् स्मरामः ये देशस्य स्वतन्त्रतायै स्वप्राणानाम् आहुति दत्तवन्तः। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदयस्य नेतृत्वे निर्मितम् एतत् संविधानं सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः समानाधिकार ददाति। तस्य नेतृत्वे रचितः संविधानं न केवलं शासनव्यवस्था दर्शयति अपितु नागरिकाणाम् उत्तरदायित्वं कर्तव्यं च स्पष्टतया निरूपयति। अस्मिन् संविधाने समानता स्वतन्त्रता बन्धुत्व न्यायः च एते मूल्यमानाः निहिताः सन्ति। जाति धर्म भाषा लिङ्गभेदं विना सर्वे नागरिकाः समानम् इति अस्माकं संविधानस्य मुख्य सन्देशः अस्ति। गणतन्त्रस्य अर्थः न केवलं मतदानः अधिकारः अस्ति। गणतन्त्रस्य वास्तविकः अर्थः अस्ति नागरिकाणां जागरूकता कर्तव्यनिष्ठा राष्ट्रहिते एतत् समर्पणं च। यदि वयं स्वकीयकर्तव्येषु प्रमादं कुर्मः तर्हि गणतन्त्रस्य आधारः दुर्बलः भवति। अतः अद्य अस्माभिः सर्वे एषा प्रतिज्ञा करणीया। वयं सदैव संविधानस्य सम्मानं करिष्यामः, नैतिकमूल्यानि पालनं करिष्यामः, देशस्य एकान्तता अखण्डता च रक्षिष्यामः। युवा एवं राष्ट्रस्य शक्तिरेव युवानां कर्तव्यम् अस्ति। ज्ञान विज्ञानं च अर्जित्वा भारतदेशे विश्वगुरुः कर्तुं शिक्षाः अनुशासनं राष्ट्रभक्ति च अस्माकं जीवनस्य मूलाधारः स्युः। अन्ते अहम् एतदेव वदामि, वयं भाग्यवन्तः स्मः यतो हि भारतदेशे जन्म प्राप्तवानः आगच्छामः। वयं सर्वे मिलित्वा भारतस्य उज्ज्वलं भविष्यं निर्मातुं। वन्दे भारतं, जयतु भारतं, जयतु। First of all, I wish you very happy Republic Day. We are gathered here today to celebrate 77th Republic Day. Our Constitution, which established India as an independent, socialist, secular, democratic republic, went into effect on January 26, 1950. Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of our Constitution, along with Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel and others founded our nation's based on justice, equality and liberty. But they promote harmony, equality and peace. The leader who forced to free us to forgive rules. This road of democracy, which is the reason we now live in a democratic country. The main event of the day is the Grand Parade on Kartavya Path in New Delhi, which presents India's defense power, cultural traditions and achievements to the rest of the world. The President raised the flag and read, it dropped from a bunch of flowers that attached to it. Indians celebrate this day with pride in their nations and pay tribute to our freedom soldiers. Every year India celebrates the Republic with the theme this year's theme Vande Mataram, and the chief guest will be the top leadership of the European Union and the President of the European Council. India has one of the greatest constitutions in the world and is the most populous nation on earth. India is the world's largest democracy. India is still hampered by a number of issues including terrorism, murder, corruption and crime. Year after all these years, as a republic, India continues to face these kinds of domestic problems. As lawful citizens, it is our responsibility to advance the country and defend our country to be true citizens. I am proud to be an Indian. Once again, I wish you all a very happy Republic Day. Thank you, Jai Hind.